अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास नोट्स ऑन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकंड चैप्टर ऑफ एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी। द थर्ड टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। Water is the medium for life. It is the most abundant compound in all organisms. It forms 65 to 89% of different organisms. Water content in human tissue. If we are going to discuss about the water content in human tissues, is bone tissues. Bone cells contain 20% of the water, and the brain cells contain 85% of the water. Let's move to the key properties of water. Solvent properties. What is a polar molecule? Polar molecule mean water has hydrogen and oxygen, two ions. Hydrogen ion is positive, oxygen is negative. That's why it is a polar molecule and dissolve ionic and polar substance very easily. Ionic are positive and negative charged ion, and the polar substance are that have charged group. When any reaction occur in the aqueous medium, it dissociate chemical component into positive and negative charge, and aqueous medium give a good dissociation of positive and negative ion in a chemical reaction, and chemical reaction occur in a very good way. Due to this property, all the chemical reaction occur in the aqueous medium. It is the good property for the dissociation of the positive and negative ion in biochemical reactions. Another very good quality or very good property of the water is in non-polar molecules, example fats, insoluble in the water, and it also helpful by maintaining the membrane for compartmentalization. It allows some molecule to come from the from cell or outside from the cell. The first property of water is solvent property. The second property of water is heat capacity. Heat capacity is the property of water absorb heat with minimal temperature change. Specific heat capacity of water is the number of calories required to rise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degrees Celsius is 1. 1 is the specific heat capacity. Let me explain. Number of calories required to change the temperature from 15 to 16 degrees Celsius is 1 gram. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एनर्जी होती है ना वो यूज़ हो जाती है हाइड्रोजन बांड को तोड़ने के लिए। वाटर में क्या होता है? H2 होता है, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड होता है। जब उसको हम तोड़ते हैं तो उसके लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी हीट कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वाटर एक स्टेबलाइज़र के तौर पे एक्ट करता है। ये क्या करता है? ऑर्गेनिजम्स की टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, और अचानक से जो गर्मी आ जाती है, अचानक से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसका जो कॉज होता है लिविंग मटीरियल्स पे, उसको क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है, उसको स्टेबलाइज करके। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज हीट ऑफ वेपराइजेशन. Heat of vaporization is water absorbs significant heat when evaporation occurs. Evaporating cause absorption of heat. ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। जो स्पेसिफिक हीट है वेपराइजेशन की वाटर की, वो है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। ठीक है, ये क्या करती है? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हीट की जो प्रोडक्शन होती है ऑक्सीडेशन के बाद, उसको कंट्रोल करने में। प्लांट्स के अंदर जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना,
वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए होती है और एनिमल्स के अंदर पर्सपिरेशन के ज़रिए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो अगर हम 2 ml है हमारे पास वाटर, उसका 1 लीटर जो वाटर है उसको इवेपोरेट होने के लिए 998 की हीट को कम करने के लिए उसको सिर्फ अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। The next most important property is ionization of water. Water ionizes to form hydrogen and hydroxyl ion. It maintains equilibrium at 25 degrees Celsius. What is the, it's a very important MCQs also here. What is the maximum equilibrium capacity of water at 25 degrees Celsius is 10 की power minus 4 mole per liter concentration for each ion. Um, participate the water also participate in cellular chemical reactions. The fifth most important property of water is protection. It can lubricate. Tears protect the eye from the frictions. Cushioning form a protective layer, fluid layer around the organ to protect them from trauma. Here is a summary importance of water. Medium for reaction, solvent for polar and ionic substance, heat capacity to stabilize the temperature, vaporization give us the cooling effect, ionization maintain the pH, protection form lubrication.